Hi friends, and how are you doing today? Thanks for connecting, and I believe you're one of the test takers or 20th of January 2021. As you know that I always make a video prior to the exam so that I give an opportunity to the students to connect with each other. And this video is just for you. I want कि आप comment section को hit करें और वहाँ पर बताएं कि आप कहाँ पर 20th of January का IELTS एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. अगर आपके पास आइल्स एग्जामिनेशन की कन्फर्मेशन और सारी डिटेल्स आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपका मॉर्निंग या इवनिंग स्लॉट है और क्या आपकी आइल्स स्पीकिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी. वेल दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वुड रियली हेल्प द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country and the world to get to know that who else is going to take the exam at the same venue. It would really help you to connect with the people who are going to take the exam at the same venue at the same time. अगर आपकी confirmation नहीं आई है, you will get to know that many others are still waiting for it. आप हमेशा IDP को directly approach कर सकते हैं via email or you can call them on the hotline or the dedicated line by IDP. लेकिन अभी आज हुई है 17th I guess, so by today or tomorrow you will definitely get it. Now another thing that I would really appreciate if you do it for me is कि अगर आपकी स्पीकिंग हो चुकी है तो बताइए क्यू कार्ड क्या रहा या कोई पार्ट वन टॉपिक कोई नया पूछा गया तो प्लीज़ शेयर कीजिए. एंड नाउ अ वास्ट मेजॉरिटी हैज स्टार्टेड सेइंग कि उनको डेफिनेटली नए क्यू कार्ड्स पूछे जा रहे हैं और ये सभी न्यू क्यू कार्ड्स आइल्स स्पीकिंग बूस्टर पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आप कभी भी इसे परचेज कर सकते हैं और अगर आपका कन्फर्मेशन नहीं आया तो डोंट पैनिक. इसका मतलब यही समझिए कि आइल्स स्पीकिंग आपकी 20th के बाद ही आने वाली है. इज़न्ट इट अ गुड साइन? क्योंकि अगर मैंने आइल्स एग्जाम बुक किया है तो आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि ये मेरे आइल्स स्पीकिंग टेस्ट के बाद ही हो, दैट इज LRW के बाद ही हो. एंड another thing that I would say that by any chance if you miss your IELTS speaking test date, don't worry, we can assist you in the rescheduling of your test date. And right now all I would like to recommend is continue to practice hard. Don't think that the exam would be cancelled because there is no any update regarding the same. चाहे अभी venue में जो gathering है उसको 50 तक confine कर दिया है, but IELTS टेस्ट हो रहे हैं एंड वुड कंटिन्यू टू हैपन एज फार एज द इंफॉर्मेशन विद मी. आप वैक्सीनेशन के बारे में मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसका जरूर ध्यान रखिए. आपका एक डोज हुआ है या दो हुआ है, अपने पास सर्टिफिकेट जरूर रखिए. यहाँ PRTC भी करवा के जा सकते हैं. वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी फीडबैक दिया कि किसी ने उन्हें बॉदर नहीं किया. इनफैक्ट उनसे पूछा भी नहीं गया कि आपकी वैक्सीनेशन हो रखी है या नहीं हो रखी. इज़न्ट इट अ गुड साइन? अगर नहीं पूछते हैं तो क्या बात है, लेकिन अगर पूछते हैं तो प्लीज़ आप अपने पास वो सारी इंफॉर्मेशन रखिए. ऐप डाउनलोड करके रखिए आरोग्य सेतु, ताकि ऑन द डे आपके लिए किसी तरह का भी कोई पैनिक सिचुएशन ना हो. दिस इज प्रीटी मच ऑल इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड डोंट वॉच एनी प्रेडिक्शन वीडियोज और एनीथिंग दैट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली. थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ.